our chairperson, Ms. Ritu Shah, I, Prachi Trivedi Shah, Honorary Secretary, Flow Hyderabad Chapter, would like to welcome you all to Sacred Stories, a journey of mythology and heritage, with none other than author Mr. AKSHAT Gupta. We are also joined today by our guest, Ms. Kalpana Ramesh, the woman behind the restoration of the Bansilalpet stepwell, and Ms. Mangla and Mr. Raghav Bhatt, who have choreographed a beautiful Katha dance for us this evening. Could I kindly request everyone to please put your phones on silent and rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara, Banga, Indra, Himachala, Yamuna, Ganga, Ujjala, Jaladhi, Taranga, Tava Shubha Name Jage, Tava Shubha Ashisha Mange, Gahe Tava Jaya Gatha, Janagana Mangala Dayaka Jaya He, Bharata Bhagya Vidhata, Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. For a ceremonial lighting of the lamp, it is an honor to request Flow Chairperson Ms. Ritu Shah, our guests today, Mr. AKSHAT Gupta and Ms. Kalpana Ramesh. Could I kindly request our chairperson, Ms. Ritu Shah, to felicitate our speaker, Mr. AKSHAT Gupta, and address the gathering. Mr. AKSHAT Gupta is Amazon's best-selling bilingual author, residing currently in Mumbai. He is the creator of a trilogy titled The Hidden Hindu, based on mythology and science fiction. As a lyricist, Bollywood screenwriter, and poet, AKSHAT is a versatile artist with a story that touches the hearts of everyone. He has a number of films in his collection, including 2 with T-Series and other well-known production houses of Bollywood. Thank you, Mr. AKSHAT Gupta, for joining us today. Hello. A very good evening to one and all. Every human society possesses a mythology which is inherited, transmitted and diversified by literature. Mythology can be defined as the sacred history of mankind. Today, I stand before you to share a journey transcending the boundaries of time, myth and reality. A journey that resonates with the core of Flow Hyderabad Chapter's mission: empowerment, resilience and transformation. In the heart of every myth lies a truth, a lesson that can transform, inspire and empower. AKSHAT Gupta, an illustrious Indian writer and a beacon of hope for many, has masterfully woven these myths into the fabric of our contemporary lives through his best-selling trilogy, The Hidden Hindu. AKSHAT's journey is not just about reviving mythological tales, it is a testament to the human spirit's resilience. Battling depression and standing at the precipice of despair, he chose to find solace and purpose
in storytelling, highlighting the critical importance of mental health, awareness and support. This aspect of his journey is a powerful reminder that there are unseen battles behind every success, especially pertinent in a world where women often carry unseen burdens. The Flow Hyderabad chapter has always championed the cause of women's empowerment, recognizing the strength and potential of each woman to be a change maker and a storyteller in her own right. AKSHAT Gupta's transition from contemplating the immortality of mythological figures to creating a legacy through his words embodies the very essence of empowerment that we strive to promote. As we gather here today, let us pledge to support each other, to break the chains of silence around mental health and empower each voice, each story that seeks to make a difference. Together, we can bridge the gap between myths and realities, bringing to life the tales of empowerment and resilience that will inspire future generations. Today, at this stepwell, which is a story in itself, let's engage with AKSHAT Gupta, the master storyteller. Thank you so much. Thank you, Ritu. It is with immense pleasure that I now invite our chairperson to felicitate our guests, Ms. Mangala and Mr. Raghav Rajbhai. Could I kindly request our guests to join our chairperson for a photograph? Yeah, ma'am, please, ma'am. Yeah, ma'am. Could I kindly request our chairperson to felicitate our guest, Ms. Kalpana Ramesh? Please, ma'am. Sir, please, sir. Sir, please, sir. Thank you, Ritu. Could I kindly invite our guest, Ms. Kalpana Ramesh, to say a few words? Ms. Kalpana Ramesh is a Hyderabad-based interior designer and a trained architect. Kalpana turned a water conservation champion by leading initiatives like Save 10K Bores, Lives, Live the Lakes, and Blue Hyderabad, aimed at creating awareness and increasing civic and moral responsibilities towards protecting water, its resources, and restoring them to their former glory. Kalpana spearheads the initiatives through her social enterprise, the Rainwater Project. This provides integrated water solutions. Kalpana has restored 16 step wells and various water structures in Hyderabad and Telangana, including this very beautiful Bansilalpet step well. Thank you, Kalpana, for joining us today. Thank you so much for that kind introduction. Starting from a designer to today we've become heritage water conservators. We work towards water conservation of urban lakes, ponds, any surface water bodies, and improving groundwater, which is also very much part of our heritage and our natural resources. If we don't protect our natural resources, our population is doubling up in the next 30 years, and we don't have a serious plan of where do we get our water. Today we get our water from 200 kilometers away, which is obviously not sustainable in the long run. When our population goes up, where is our water is a question we might need to answer in the next 25-30 years. So I set out on this
understanding water about 12 years ago with my own sustainable home. I have reached here now restoring stepwells. The stepwell restoration is part of our water conservation initiatives that we do. When you're sitting right now today, it's my utmost pleasure to see you all experience this stepwell. This stepwell was in garbage for almost 42 years. 42 years is like 4 decades plus. So when I still remember the first day when I walked in, it was obviously a very hopeless case in the sense you don't know where to begin, how to make it happen. So the whole struggle, right from getting letters, aligning with the government and how to raise funds, and what is the consortium that has to come together, including conservation architects, urban planners, and what can become of this space. So in less than 1 year, we've been able to make this whole stepwell happen is something I felt in pride because we work even 16 to 18 hours a day on most days. Because the two things are important that we align with the government, so we need to keep their interest intact, and the other most important piece of the story, the community around. They cannot take this trouble of moving out 2,000 tons of garbage from here in these narrow lanes and to take them out. And the mandapam that you see behind me was all reconstructed. So cutting in huge amounts of stone, getting them, dressing them and putting them in place, while we had to align the community, dovetail their interest in the project. So it's a success story of not just 1 or 2 people. I would say a whole team, about more than 100 professionals have worked towards making this whole restoration happen. The Bansilalpet stepwell can today save, it can store about 22 lakh litres of water, and over annually it can store a few crore litres of water. It can reduce urban flooding in the low-lying areas of Hussain Sagar. It can reduce flooding in this area to a considerable bit and also provide water security. We've mapped and monitored about 100 borewells in and around this area in about 1/4 square kilometer. Few of the borewells which were a few hundred feet today has water at 12 feet to 13 feet. You're sitting in front of 30 feet water. This is actually about 30 feet. And this is natural spring water. You see it green because there's direct sunlight going in. We will be treating this water soon. In a few months' time, you would be able to see this become potable water. That's our dream, and we're going to make it happen. And I believe that every well, if it comes back to its original purpose, people will handhold it. And it's a beautiful congregation of enterprises, NGO, government, communities. All of us came together in a very nice way. Of course, we had to bring that vision together and get everyone together, but no one went to courts, no one went in a negative way, though we had a lot of hitches, but we were able to positively restore this, and this is a story to tell for the whole country today. How it is maintained, how it has become an interesting cultural space today, and a very interesting public space. Literally trash to treasure. From a completely trashed land, today it's the one of the 5th attractions in Telangana. And after Bansilalpet, we got a call from Rashtrapati Bhavan to restore 3 stepwells in Rashtrapati Nilayam. That was a very, very prestigious project for us. They were going to close up those wells. When they saw the success of Bansilalpet, it resonated in Delhi, and they thought, if something like this can happen in Hyderabad, why are we not restoring our stepwells in the President's Retreat? Why are we thinking of closing them? So, the success story is not just Bansilalpet. Today we have almost completed 25 stepwell restorations across the state, and we have about 600 heritage stepwells just in Telangana. Is something that all of us should be proud about. And many of
them ask why restore stepwells? Are you even going to find water? The answer to that question is our traditional water body is so intuitively, perfectly planned that it connects to the local aquifer zone and the strongest stream available. So there is no debate when it comes to traditional water systems, that it is definitely connected to the best stream possible in this zone. So restoring it is very, very important. We don't need to, we have aligned scientific maps from NRSC and ISRO maps, and we have found time and again that these are the best places for wells. And this has helped improve local groundwater security. If I can say that this well will promise water for this area for the next 100 years, that is the truth. So these are our lifelines, and we need to restore not just step wells, any well. These are connected to our what is called a shallow aquifer zone. Shallow aquifers are water conveying layers which are under the ground and between the first stone layer. So that's a very important zone which none of the cities are tapping these zones, where most of our wells are filled up and built upon. So you block these aquifers and they flood in another area, not knowing, because water will flow. There's no stopping water. But if we can make them local, to impact local water stories and create such beautiful spaces in our urban stories and weave them within. In those days, this well probably was used in a different context, but tying in with today's context, culture, history, these are things that resonate much more than water. But I believe that while sitting here for the next 2 hours, you will experience water like no other. I mean, you will just feel like you're sitting by a river and listening to some music or seeing a dance being performed. It's an amazing experience. So bringing such experiential spaces to the city is also another asset. And Bansilalpet, importantly, receiving several awards in the state and the country, but also has got the Sustainable Big 5 Impact Awards in Dubai, where we had contenders from China and other countries, and ours was the first in that category. So that is something to be proud about. And I really hope and wish most of us, we don't see water as a finite resource. We think it's like AKSHAT Patra, we keep getting water. That's not it. How much will we use in our lifetime if we can put back that water back into the ground by rainwater harvesting or saving a well? It's a big thing that you're giving back to the next generations. These wells were built with far-sightedness from our ancestors. They looked at so many generations benefiting from these. We should not be selfish. We should hand these responsibly to the next generations. They should not fight for water. They should know the abundance of water and what water means. Literally 3 minutes of no air and 3 days of no water, you die. That's how important water is. So we need to look at water as a beautiful resource which will safeguard us and our children and generations ahead. And wherever you think you can contribute or see if you can support an activity like this, you should come forward and create a win for these water bodies, which can become like this. This is one template that we've created today. This place earns its own money. It earns its own, money that can be painted for a very long time. And thanks to GWS, who also have funded and also are maintaining the space so beautifully, without which we cannot create this story. So thank you so much for listening to me, and hopefully you will all conserve water, respect water, and give back to Mother Earth. Thank you. Thank you, Ms. Kanisma Ramesh, for creating awareness towards responsible protection of water. It is with great honor that I invite our speaker, Mr. AKSHAT Gupta, to address the gathering, and our chairperson, Ms. Ritu Shah, to take the session forward. Your mic is AKSHAT. Had I called all my crew members
not this venue and other venue and asked them to sit down, I think so nobody would have. So I think so everybody's enjoying the place. Okay. I need a louder yes. Yes. Thank you. Thank you everybody for being here and being so accommodative in the seating. AKSHAT mythology is always related to religion. You know, when you listen to the word mythology, the first thing that strikes your mind is religion. We've covered this place in the book that we just felicitated you, Lost in Time, wherein we've covered a lot of places of Hyderabad, Telangana, which needs revival. So this year we've worked a lot on sustaining her culture, which was one of our initiatives taken by Flow Hyderabad chapter this year. So when we wanted to listen to you, there are many members here. In fact, I had prepared almost 10-20 questions to ask you, and I got calls from many members asking me, please don't ask questions, let AKSHAT Gupta talk. So mythology, heritage place, conservation, water, religion, everything became like a culmination and some divine presence that everything fit in. So I'll start, and thank you for coming here, Mr. AKSHAT Gupta. Yeah, I think we all are eager to hear it from you. So I will ask one question, and I think so everybody here wants to listen it straight from you. AKSHAT, what inspired you to delve into mythology and incorporate it into your writing? Usually what we get started with is good evening ladies and gentlemen, but I'm not going to say that today. It's just ladies are all out here. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Am I clearly audible? How many of you are there जिनको हिंदी समझ में? You can't hear? Okay, I'll try to be a little more louder, man. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ नहीं आती है, मुश्किल से आती है? Anybody who doesn't understand Hindi? Just asking for for a smoother conversation. It's okay. अभी भी नहीं आ रही आपको आवाज? आ रही है? So we're gonna keep it a mixture of Hindi and English. This is a way that I have been introducing myself since quite some time, and that is, good evening everybody. My name is Urmila Putra AKSHAT Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet, and lyricist, and that I'm proud of. I genuinely have been telling this to everybody wherever I stand. That first of all, I am Urmila Putra AKSHAT Gupta. Secondly, I may be son of Sri Hari Gupta. And whoever I am today, I'm that person because I chose to first become a full-time house husband and then became a part-time author, screenwriter, poet, and lyricist. And that's the truth of my life that I'm super proud of. Now, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उधर ही ज़्यादा ध्यान देके बात करूँ. Before that, I start answering Rituji. I wish to thank all my schools and colleges. कि मुझे I've got a chance to be in the co-ed school and colleges. और इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को एक साथ देख के पसीना तो मुझे अभी भी आ रहा है, लेकिन कम से कम मुझे पानी में नहीं कूदना पड़ेगा. Because I have been around a lot of beautiful women, teachers, juniors, seniors. So thank you all for being here, giving, supporting this cause and sitting here. I don't know why you guys are sitting and listening to me. I will try my best to not only tell you something new about ourselves, yourselves, but also will try to keep you entertained at the same time. All sorts of good. So coming back to Rituji's question. Most of you that I see must be having children. And when we will ask our children, give us 5 names of Marvel superheroes, they will tell you. That is on the tips of their fingers. Iron Man, Spider-Man, Hulk, this, that. Then you will ask, give me 5 names from DC comics, DC films, and they will tell you. And then you will ask, give me 5 names out of 7 Chiranjeevis written in ancient Hindu scriptures, and they will not be able to tell you.
before it is their fault, it is us. It is our fault. We have not been teaching all of them that you are supposed to say that you are Urmila Putra. We need to teach our kids. We were talking about the restoration of our culture, sustaining our culture. We are sitting in such a beautiful place. But who has restored this? A lady. So it is in my hands to call myself Urmila Putra Gupta. You guys need to know who you are. And when I say, I probably tell it that I am Urmila Putra Gupta. I'm going to explain you in short why do I do that. But also involving this question. So when I started thinking about this and when I started teaching my son, who was 6.5 years old then, now he's around 15, I live with an irony every night that I don't get to meet him. मैं अपने बेटे से 9 साल से नहीं मिल पाया। मैं 9 साल से उनको देखा नहीं, उनकी आवाज़ नहीं सुना, मुझे नहीं पता वो क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, उनका फेवरेट फूड क्या है, उनका फेवरेट हीरो क्या है। 15 साल के हैं तो उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड बनी है नहीं, उनको किन बातों का ख्याल रखना है, I don't know. So I started writing, I was trying to explain him, बेटा ये 7 चिरंजीवी होते हैं, these are the 7 immortals. And it was so tough for me to get those 7 names marked up. Maybe ऐसा हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को उन 7 लोगों का नाम अभी at present याद ना हो. So the 7 immortals mentioned in ancient Hindu scriptures are हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, अश्वत्थामा's मामा कृपाचार्य, राजा बलि जिनके लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था, and last is Ravan's brother Vibhishan. These are the 7 immortals, and these all have superpowers. They are superheroes. मतलब आज की डेट में if your kid knows कि Thor का जो weapon है वो axe है. The Thor character has a weapon which is an axe. The first one to pick up an axe was Parshuram. It was not Thor. It has come from us. The only problem is that we are not telling it to them. So that is how it started. So I thought, why not weave a story around these characters so that it becomes as interesting as Marvel and DC for the kids and everybody to understand and be entertained at the same time. While I hate when things go preachy. If I'm sitting on that side, if somebody is preaching me, I will not be interested. I will pick up my phone and I will start doing something. This is who we are. हम लोगों को स्कूल कॉलेज में इतना लंबा बैठा दिया गया ना कि अब कुछ भी होता है तो लगता है बस अब ये भाषण शुरू होगा and we get disinterested. So number one, we are not going to do that. I will try my best not to do it today. So starting and taking you back from why Urmila Putra Gupta, we were talking about sustaining our culture. मुझे नहीं पता ऐसा कब हुआ, मगर आप लोगों की वजह से हम जिस धरती पे बैठे हैं, when I say धरती, I'm not talking a state or a city, I'm talking about the भूमि भारत. हम उस कल्चर से आते हैं जहाँ हमारे जितने देवी देवता हैं, अभी हम हनुमान की बात कर रहे थे, उनका नाम अंजना पुत्र है, अंजनी पुत्र, अंजना पुत्र बोलते हैं. पानी के पास बैठे हैं, भीष्म पितामह को गंगा पुत्र बोलते थे. अभी राम जन्मभूमि वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उनको कृष्ण जी को देवकी नंदन और कौशल्या नंदन बोलते थे. दशरथ पुत्र भी बोलते थे, लेकिन आपके काल में आज भी पुराने लोगों से जो पढ़ा है ना, वो देवकी नंदन कौशल्या नंदन पढ़ा. इनमें से कुछ लोगों ने शादी नहीं की. जिन लोगों ने की वो शादी को अपनी पत्नियों के नाम से जाने गए. गौरी शंकर, सिया राम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण. So we come from that land where we males are known by our mother's name till we are not married, and then our wife's name when we are married. आपके देश में कभी स्वयं वधु नहीं हुआ है, हमेशा स्वयं वर हुआ है. You were given the power to choose who your husband will be, and this has been since forever. हमेशा से ऐसा ही रहा है. 100 धुरंधर खड़े कर लो, 100 वॉरियर्स आएंगे, उनको अलग अलग कंपटीशन में उतारा जाएगा, कौन सबसे अच्छा घुड़सवार है, कौन सबसे अच्छा तीर चलाता है. उन 100 लोगों में जरूरी नहीं कि एक जीते. ऐसा भी तो हुआ होगा कि 5, 7, 10 जीते होंगे एक साथ. वो जो 10 बराबर के थे ना, उनमें से आप चुनती थी, बाकी किसी भी क्राइटेरिया में
आपके पास पावर था वो क्राइटेरिया सेट करने का, एट रैंडम वहां के रूल्स चेंज कर देने का और बोलने का कि ये 10 जीते हैं लेकिन इनमें से मैं इसको चुनती हूँ। आज की डेट में मैं यहाँ बैठा हूँ और ये आई एम गोना लीव यू गाइस विद अ फ्यू क्वेश्चंस। आप रात को घर जाएंगे, शायद कल गाड़ी चला रहे होंगे, जब भी आपको वक्त मिलेगा अपने आप के साथ तो इन सवालों का जवाब ढूंढिए। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में नैपकिन, now there would have been a day when I went to some place and chose this napkin, right? I have paid it for it, but I chose to pick up this napkin. Now what will you tell? मैं इस नैपकिन का हो गया है, ये नैपकिन मेरा है, ये नैपकिन मेरा हो गया ना, बिकॉज आई चोज। मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश में कब हुआ कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरी पत्नी है। ऐसा नहीं होता है। मेरी जो समकक्ष है वो मेरी पत्नी नहीं है, मैं उनका पति हूं। And I am proudly telling you, she is right now my wife, जिनका मैं पति हूँ, जो मेरी समकक्ष है। समकक्ष is a word which means equal, और नारेश्वर वाली बात पे समकक्ष आता है। अक्षय जी, I can understand कि आप इतनी ladies को देख के ना, you've like diverted your talk only like women centric, and you're just talking about like wife. Or I would like to hear from you, like mythology is huge, it's vast, okay? Mythology has sacred stories. So, how do you conduct the research? Because there are so many interpretations on mythology. There's so many interpretations on sacred stories. So, we will not touch particularly any religion or something like that. But mythology is also religion because they are stories, they are inspirations. Okay, you have characters in mythology, whom we look up to. They become our role models. So, and with so many interpretations out there in the market, how do you conduct your research for the mythological stories, and what sources do you find most valuable? For the starters, it depends on all of us whether we call it mythology or we don't. Mythology, the word mythology comes from mithya. Mithya मतलब कहानी, mithya मतलब thought, imagination, कल्पना। सत्य मतलब what happened। ये जब रिस्टोर हुआ होगा ना, इसके पहले जो यहाँ 2000 टन कचरा पड़ा हुआ था पिछले 42 साल से, तो ये मिथ्या हो गया होगा। यहाँ कभी बावड़ी होती थी, पर ये सत्य है ना। So I always choose not to ever call any religion's text as mythology, but satyalogy. If you call it mithya, it is mythology. If you call it satya, it is satyalogy. For me, it is satya. Things happen. Now coming to how do you perceive it? You just use the word perception. I'm not going against all. Actually, even your perceptions and also the challenges that you must have faced while incorporating these narratives or this mythology or satyalogy that you're saying into your narratives, and how did you overcome them? The challenges that you faced, the moment you started writing on the truth of life, as you're saying that it's not myth, it's satya. We want to hear those challenges, the art of storytelling, the narratives, the interpretations, and all of that. You want to see the art of storytelling and how I perceive things, because this is Ficky Flow, right? What is the full form of flow? Ficky Ladies Organization. I'm feeling pleasure and I'm honored to be sitting and talking to these many Ficky Ladies Organization. There's this word called God. अब गॉड अगर उसको मतलब लिटरल में लेंगे तो गॉड मतलब क्रिश्चियंस के भगवान, करेक्ट। गॉड का फुल फॉर्म गॉड सून डॉटर भी होता है। लेट्स सी परसेप्शन वाली बात है। आपने रामायण के बारे में, हम सब ने रामायण सुनी है ना, और हमने ये भी सुना है कि जितने झगड़े होते हैं सब महिलाओं के कारण होते हैं। सुना है हम लोग, सब ने सुना। मजाक हम लोगों ने बनाया है, दूसरों ने हमारा बनाया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम मैट्रियार्की सोसाइटी होते उस समय भी, तो रामायण और महाभारत नहीं होता। अगर डोर आप लोगों के हाथ में दे दी जाएगी तो विध्वंस नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्रिएटर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स हैं। दूसरी बात,
रामायण के बहुत सारे परसेप्शंस आपने सुने होंगे, बहुत सा, जैसा आपने बोला कि मार्केट में बहुत सारी माइथोलॉजी बुक्स हैं और सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से एक परसेप्शन देता हूँ जो आपने आज तक कभी कहीं नहीं सुना होगा, या आप लोगों ने आज तक कभी कहीं इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि ये मैंने खुद सोचा है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं। बुद्धिजीवी है ना हम सब, भगवान ने सोचने और बोलने दोनों की क्षमता दी और सबको बराबर दी। तो रामायण, अयोध्या, राम, रावण, ये सब सुनते 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 एक रोज एक ख्याल आया जो मैं आप लोग से साझा कर रहा हूँ। जब बात पूरी हो जाएगी इस कहानी की तो फिर आप बताइएगा कि आपका इसमें क्या सोचना है। Then we will start conversation. आपको पता है ना कि रावण ने, I can go on this way, right? आपको पता है ना कि रावण जाके ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगे थे कि ना मेरे को कोई देव मार सकता है, ना असुर मार सकता है, ना ये मार सकता है, ना वो मार सकता है, ना मनु मार सकता है, ना गंधर्व मार सकता है। वरदान देने के पहले ब्रह्मा जी ने बोला तुमने इंसानों को नहीं काउंट किया, इसमें मानवों को काउंट नहीं किया। तो रावण ने बोला था कि वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है आमतौर पे, करेक्ट। आप लोगों को मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो राम बोलते हैं वो सीता के में कितने अधूरे हो जाएंगे। इस परसेप्शन पे मैं आपको सुनाने वाला हूं। हमको तो यही दिखाया गया ना कि सीता को बचाने राम गए थे, सीता को उठाकर रावण ले गए थे, ऐसे ही एक और परसेप्शन लीजिए मुझसे। जब ये पता था कि जो इंसान रावण को मार सकता है वो तुच्छ ही हो, वो पावरफुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसको पता रहेगा कि वो कौन है तो फिर वो तुच्छ नहीं रहेगा। तो वो व्यक्ति जिसके हाथ से रावण को मारना है वो तो तुच्छ होना पड़ेगा। तो शायद देव गए होंगे विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम में और बोलोगे कि अब क्या करें, और विष्णु जी ने बोला था मैं राम अवतार लेके उतरता हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं होगा, मुझे कुछ याद नहीं होगा क्योंकि मुझे आई हैव टू प्ले अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट एन अवतार। अवतार तो उनकी करनी से बने ना वो, इसीलिए हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रामचरित्र मानस मतलब एक मानस जिसके चरित्र को उसने जिस तरीके से गढ़ा और ढला, इसलिए हम उसको राम कहते हैं, करेक्ट। तो वो एक आम आदमी थे, ये मेरा परसेप्शन है। और जब आप कहानियां पढ़ते हैं, चाहे माइथोलॉजी बोल के चाहे सत्यालॉजी बोल के, तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। आप उसको व्हाट आर यू टेकिंग आउट ऑफ इट इज अ बिग क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई हैव टेकन फ्रॉम रामायण। आप सोचिए कि ऐसा हुआ होगा शायद कि जब राम यहाँ आए होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा कि मैं विष्णु अवतार हूँ, और वो इतने अच्छे निकले कि अपने पिता के एक वचन पे अपना राज्य छोड़ गए। जो व्यक्ति अपने हक की चीज पे लड़ नहीं रहा, वो दूसरे के राज्य में जाकर उसको हराएगा, लड़ेगा, मारेगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उसका चरित्र ही नहीं। अब यहां फंस गए होंगे सब देख कि यार राम जी तो चले गए, मगर इनको ड्राइव कैसे करें? तुच्छ मानव से मरवाना है। तब लक्ष्मी बोली होगी कि उनको मेरे को संभालने दो, मैं जाती हूँ सीता रूप में, लेकिन सीता रूप में जाऊंगी और एक योनि से निकलूंगी। If I will come out of a mother's womb, then the problem is कि Ravan had the control over all the 9 planets. So he can manipulate my planetary movements and decide what I will do. तो चलो मैं मानव से निकलूंगी, मैं धरती से निकलूंगी ताकि मेरी कुंडली ना बने। तो सीता धरती से निकली। अब सीता जनक की पुत्री बनी, जानकी कहलाई। एक रोज ऐसा हुआ कि परशुराम आए वहां पिनाका धनुष करते, जो कि शिव जी का धनुष था, कि जब उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। दैट इज अनदर स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ दैट। पर उन्होंने, मैं खड़े हो सकता हूं, इज इट ओके फर्स्ट? तो मैं तब तक खड़े रहता हूं जब तक मैं गिरूंगा। तो एक दिन परशुराम आए राजा जनक को पिनाका धनुष देने के लिए कि ये रखो, क्योंकि मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है समाज को, और अब मैं जा रहा हूं महेंद्रगिरी पर्वत में तपस्या करने। उस समय 6 साल की सीता वहां घूम रही थी, जिसको ये निकलवाना था परशुराम के मुंह से कि पिनाका धनुष उठा के उसकी प्रत्यंचा जो चढ़ाएगा वो होगा इस बच्ची के लिए सही वर। वो लक्ष्मी जी उसको पता था क्या करना। वो गई और परशुराम के सामने उस धनुष को उठा दी, जिसको बाद में बड़े बड़े धनुर्धर हिला नहीं पाए। तब परशुराम के मुंह से शायद सीता ने निकलवाया होगा कि बोलो कि
कि जो इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो मेरे लिए सही वर हो। समय बीता, राम आए, प्रत्यंचा चढ़ाने में धनुष टूटा, वो सब कहानी हमको पता है। उसके बाद जब राम को जाना था वनवास पे, तो राम ने सीता से कहा था कि आप तो राजकुमारी हैं, आप मत जाइए, आप यहाँ रहिए आराम में, ये मेरा वचन है, मैं निभाऊंगा। मगर सीता को जाना था क्यों? जब गई थी वो तो पता है, पर क्यों गई थी? क्योंकि सीता को राम एक तुच्छ मानव जो बने हुए थे, उनको ड्राइव करना था रावण तक। इसके आगे की कहानी क्या है शॉर्ट में बता देता हूँ। सीता साथ में गई, कहीं कहीं रुके हुए थे। एक दिन उन्होंने बोला सोने का हिरण है, मुझे चाहिए। सीता और राम को पता था ना कि हिरण सोने का नहीं होता। राम गए, कृष्ण लक्ष्मण जी गए, वो लक्ष्मण का तिरस्कार किया, डरपोक हो तुम, जा नहीं रहे अपने भाई की मदद के लिए। उनको वो करके भेजी वहां से। अब रावण आया, जब रावण आया तो वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, तो शायद सीता बोली होगी कि तुझसे ना हो पाएगा, मैं खुद बाहर आती हूँ, तुम चल लेके। क्योंकि राम को वहां से उनके साथ गए, लेकिन जैसे रावण छूने वाला था तो बोले छूना नहीं, तेरे पे एक और ऑलरेडी एक श्राप है कि मेरे पे हाथ लगाएगा तो 1000 टुकड़ों में गिर जाएगा तू, तो तू हाथ नहीं लगा सकता मेरा, लेके चल। वहां पहुंची, वहां पे हनुमान जी आए थे कि हे सीता चलिए मैं आपको आपके राम के पास वापस ले चलता हूं। सीता बोले मैं नहीं जा रही, राम खुद आएंगे मेरे को यहाँ लेने, क्योंकि अगर हनुमान जी के साथ चली जाती तो राम को आना नहीं पड़ता, तो रावण का अंत कैसे होता? आप देख रहे हैं कि ये राम की जो पूरी कहानी जिस तरीके से आप लोगों ने आज तक देखा है, उसका एक ये वर्जन है, उसका एक ये वर्जन है कि शायद सीता ने राम जी से करवाया, वो सारथी बनी हुई थी, क्योंकि उनको उनके हाथ से नहीं मारना था ना, उनका तुच्छ होना जरूरी नहीं था, राम का होना जरूरी था। ये है सीता, और ये हमको पढ़ाया गया है इस तरीके से। इसीलिए कृष्ण को बचपन से पढ़ा था, इसलिए कृष्ण लीला में बचपन में बड़ी सारी बातें कि ऐसा किया वैसा किया, बचपन में इसको मारा उसको मारा। राम के बचपन की ऐसी कहानियां नहीं, क्योंकि राम को नहीं पता था कि मैं विष्णु होता। तो this is how you perceive a story from your own eyes. When you read it and when you start thinking, it gives it, the story gives back a lot of things. वो आपको वापस करती है कहानी कि सुनो इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो। इसीलिए वो लिखा इस तरीके से गया कि आप उसमें बहुत सारे अलग अलग कहानियां परसेप्शंस निकाल पाओ। मेरा पर्सनल टेक अवे फॉर रामायण, आप में से कुछ लेडीज भी जाने वाली ना अयोध्या, सब ऑफ यू गोइंग, आज मुझे बता रही थी कुछ लोग अयोध्या, आप लोग अयोध्या जाने वाले हैं। हम लोग एक कमेटी से थोड़ा लोग मतलब 5th 6th को अयोध्या जाएंगे। तो शायद कुछ लोगों ने इस कहानी को वैसे देखा होगा जैसे इस कहानी को आप मैं देख रहा हूँ, इसीलिए उसने नाम दिया होगा सिया राम। बाकी होगा तो राम सिया दिए ही, और एक कोई होगा ना जिसने बोला होगा कि राम सिया सब ठीक है, सिया राम। तो दैट इज यू एंड दैट इज हाउ आई सी। So it was not a challenge to write or to extract new stories out of it, because there's so many stories weaved inside stories. You just have to see, pick up the right story to frame a right story for yourself. So about my story, it is about a man who says कि मैं चारों युग जी चुका हूँ बिना मरे, मेरी उम्र नहीं बढ़ती, मेरी डेथ नहीं होती, मैं सतयुग से देख भूमि भारत में हूँ, मैं त्रेता का हिस्सा भी था और द्वापर का भी, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ। I am the 8th immortal that the world has never heard of before, and I was hidden in the pages of past till now. Now I've come revealed myself in search of the remaining 7 immortals. So ये करते करते in order trying to tell the new generation who we are, ये सब बन गया। Very well said, Akshat ji. Akshat ji, any one character from mythology which we can have, who has a great story, who has great take-backs, who has a very impactful life, and what, any one character from mythology wherein today we are so many of us are here, we can take back from that character, which will be that character for you and which has the maximum take back for us here. Teaches us like lot of life lessons other than Krishna. बहुत सारे नाम हैं,
बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब आपकी तरफ से नहीं पर मैं कंफ्यूज हूँ बिकॉज सब में बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, साथ के साथ चिरंजीवी इंक्लूडिंग अश्वत्थामा पे भी। बट लेट्स गो विद अनदर स्टोरी जो आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी या कम सुनी होगी। वो है पार्वती की कहानी। I know you guys must be expecting कि ये राम बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, रामायण महाभारत से कुछ नहीं आएगा, पर थोड़ा और पीछे चलते हैं। भगवान, हम लोग बड़े लॉजिकल लोग हैं, बहुत ज्यादा लॉजिकल लोग हैं। भगवान का फुल फॉर्म आप में से कितने लोगों को पता है? I've been speaking about this a lot nowadays. There's a full form to भगवान। मैं बता रहा हूँ आपको, we are this logical कि भगवान का एक फुल फॉर्म है। भगवान का फुल फॉर्म है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा, अ से अग्नि और न से नीर। नीर मतलब पानी। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर मिलके एक शब्द बनाते हैं, वो है भगवान। जितने भी ऐसे सो कॉल्ड धरती से बने हुए भगवान हैं, जैसे राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, इन पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन पांडव जो है वो बड़े शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें से कोई भगवान नहीं बन पाया। हनुमान भगवान बने, लेकिन उनको वरदान मिला था, वायु से भी, सब लोगों से वरदान मिला था। एक आम इंसान जो एक लौता हमारे पूरे ग्रंथों में भगवान बनी है, इंसान से भगवान, वो पार्वती। शिव जी और सती को प्रेम था, शिव और सती की शादी हुई। राजा दक्ष जो सती के फादर थे, उन्होंने तिरस्कार किया शिव का, वो तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया, जिसके कारण उनका नाम सती पड़ा। शिव जी जो थे वो इतने टूट गए थे, हमारे भगवान होते हैं, वो इतने टूट गए थे, वो योग में चले गए और वो अध्यात्म, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में दुनिया छोड़ दी। और फिर सती का पुनर्जन्म हुआ एक आम लड़की के नाम पे, जिसका नाम था पार्वती। और पार्वती ने बोला मुझे शिव से प्रेम है, और सबने उनको समझाया कि तुम नहीं हो सकती शिव के बराबर, शिव भगवान है, तुम इंसान हो, तुम उनके समकक्ष नहीं बैठ सकती, तुम लायक नहीं हो उनके बगल बैठने। तो उन्होंने बोला क्या करना पड़ेगा लायक बनने, उनके समकक्ष बैठने के क्या करना पड़ेगा मुझे? तो उन्होंने बताया गया कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को साध लो। अगर तुमने इन पांचों तत्वों को साध लिया तो तुम भगवान हो। जो शख्स इन पांच तत्वों को साध ले वो भगवान की श्रेणी में जाता है, ऐसा इसलिए शब्द है भगवान। तो उन्होंने सबको साधा, खूब जो भी स्पिरिचुअली मेडिटेट किया, तपस्या की, और फाइनली उस लायक बनी कि वो इंसानों की श्रेणी से निकल के जीवित तौर पर भगवान बनी, और कोई नहीं बना, कोई नहीं बना। तो एक ये मुझे लगता है कि वो जहाँ रहा वहाँ चाह, जहाँ चाह वहाँ रहा वाली बात है, वैद्य सो विद्य सो वही। तो और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, I mean you can take any name and I can just keep on telling you things on it. Anybody from the audience who wants to take a name or a question for Akshat Gupta? Ashwatthama. We have like another 5-10 minutes max. 7 चिरंजीवियों में से एक है अश्वत्थामा, और वो एक लौते श्रापित है। He is the only cursed immortal out of the 7. Remaining all the 6 are being granted immortality as a boon. पर मुझे लगता है कि मिला जुला के सब श्रापित ही हैं। अगर आपके सारे लोग चले जाए और आप ही फंसे हुए तो श्राप ही मिल जाता है शायद। बट एनीवेज, अश्वत्थामा को जो श्राप मिला, अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा इसलिए पड़ा क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपि जो उनके माता पिता थे, तो द्रोणाचार्य परशुराम के शिष्य होते हैं और उनको संतान नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने बहुत पूजा पाठ करके दोनों माता पिता ने एक संतान मांगा, तो जो संतान हुए वो थे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा जब पैदा हुए थे तो उनके मुंह से जो पहला आवाज निकला था वो घोड़े के हिलने के साथ निकला, एज इफ अ हॉर्स इज मेकिंग साउंड्स। तो इसलिए उनके नाम में सबसे पहले पड़ा अश्वत्थामा। उनके यहाँ पे एक मणि थी, वही मणि जो अब हम लोग मार्वल फिल्म्स में विजन के सर पे देखते हैं, वही सेम वही वाली मणि। तो उसके सर पे एक मणि थी जिसके कारण उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता था,
कोई कीड़े मकोड़े, कोई जंगली जानवर, कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई सुर, कोई असुर, नो, उसका नुकसान नहीं हो सकता। और ऊपर से वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य जो अर्जुन और पांडवों और कौरवों को तैयार करने वाला गुरु, अपने पुत्र को कैसे तैयार किया होगा, उसकी तो पराकाष्ठा थी। सो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑफ महाभारत। ही वाज अ वेरी गुड सन, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड ही एक्चुअली, हम लोग कर्ण के लिए बोलते हैं कि, कई लोग रावण के लिए बोलते हैं कि रावण ने कोई गलती नहीं की थी, सिर्फ उसने सीता मैया को उठाया, उसके पहले कोई गलती नहीं की थी। बहुत सारी गलतियां थी, वो उसकी गलतियों का घड़ा भर रहा था, इसीलिए राम को आना पड़ा था कि भैया भर गया, चलो हो गया तुम्हारा टाइम। पहली गलती नहीं थी। मगर अश्वत्थामा ने सिर्फ एक ही गलती की थी। अश्वत्थामा गलती किए थे अपने पिता का बदला उस तरीके से लेने की कोशिश जो पांडवों ने भी गलत किया था। पांडवों ने द्रोणाचार्य को धोखे से मारा था। आप लोगों को पता है ना अश्वत्थामा वाली कहानी, अश्वत्थामा हाथ हुआ था, हाथी को बोल के, उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब ये कृष्ण जी का आइडिया था कि एक काम करो कि पूरे युद्ध भूमि में ये बात फैला दो कि अश्वत्थामा हतो था, अश्वत्थामा हतो। तो ये फैला दिया गया, कई एकड़ों में चल रहा था फाइट, द्रोणाचार्य किसी कोने में लड़ रहे थे, उन तक बात पहुंची कि मेरा पुत्र मारा है, हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ मेरा पुत्र नहीं था, मेरा शिष्य भी था, नहीं हरा सकते उसको कोई। युधिष्ठिर के पास जाऊंगा, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह देगा कि अश्वत्थामा हतो होता, तो मैं मान लूंगा कि मेरा बेटा मर गया। वो दौड़ाए अपना रथ, चलो युधिष्ठिर के पास। कृष्ण देखे अरे ये तो गड़बड़ जाएगा मामला, क्योंकि युधिष्ठिर तो सही में झूठ नहीं बोले। तो उन्होंने सारे पांडवों और उनके साइड जितने योद्धा थे उनको बोला कि जब मैं इशारा करूंगा तो सब लोग एक साथ शंख बजाएगा। शंख नाद होता था विक्ट्री का या स्टार्ट का या एंड का, तो उन्हें सब एक साथ शंख नाद कर दिया। तो ये पहुंचे युधिष्ठिर से पूछे, हे युधिष्ठिर क्या अश्वत्थामा मेरा बेटा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर वो जो अश्वत्थामा मरा है वो आपका बेटा नहीं, एक हाथी था। मगर जब युधिष्ठिर ने मगर बोला, वहां पे कृष्ण ने इशारा किया बचाओ, तो उन्होंने शंख बजा दिया सबने। द्रोणाचार्य आधा स्टेटमेंट सुन पाए कि हाँ ये सच है कि अश्वत्थामा मारा गया, और उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। इसके बाद उनका गला काट दिया। ये बात जब अश्वत्थामा को पता चली तो बोले ये तो गलत तरीके से मेरे पिता को हराया गया, क्योंकि द्रोणाचार्य को हरा पाना असंभव था, तो धोखे से हरा दिया। और फिर अश्वत्थामा पहुंचे एक शिविर में रात को, पहले रात को फाइट नहीं होता था, सूर्यास्त हो गया, डे इज ओवर, द डे ऑफ बैटल इज ओवर। वो रात को गए शिविर में और उनको लगा शिविर में पांचों पांडव सोए हुए, उन पे तीर चलाया और उस पूरे शिविर को आग लगा दिया। वो पांडवों के 5 बेटे थे जो वहां सोए हुए थे, गलती से उसने पांडव समझ कर उनको मार दिया। जब ये बात पता चली कृष्ण को, तो कृष्ण ने ये दुख झेल नहीं पाए। तब कृष्ण ने ये श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक भारत भूमि में कोल रचित शरीर लेके with a body of leprosy till the end of the days, till the end of the world, you will keep crawling on earth. तुम रेंगते रहोगे यहाँ पे। तो ये है अश्वत्थामा की कहानी। मगर इसमें बहुत अच्छी सी सीख है। सीख ये है कि हम लोगों को अपने ढंग से जो भी हम बात सुनते हैं उसमें हमको जो स्टेटमेंट का को ध्यान से सुनना है, और जो हमारे काम का स्टेटमेंट है ना, वो लेकिन, परंतु, बट और मगर के बाद है। मैं बहुत साल स्ट्रगल किया हूँ मुंबई में, मेरे पास सब कुछ 8-9 फिल्में हैं, और चाहे शुरुआती तौर पर जब मैं अपनी कहानी सुनाता था तो डायरेक्टर्स बोलते थे या प्रोड्यूसर्स बोलते, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, यार कहानी बहुत अच्छी है अक्षत तुम्हारी, मैं खुश हो जाता था। फिर बोलते थे बट, लेकिन इस वजह से हम नहीं ले पाए। मेरे काम की बात ये होती थी कि मेरी कहानी याद नहीं है, उसके आगे क्या लगा है उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग भी आमतौर पे अलग अलग जीवन के पड़ाव में होता है ना, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ मगर, तो उस मगर के बाद वाली बात ही ध्यान से सुननी होती है। वहां देख लीजिएगा कि कोई शंख ना बजा रहा है। We want to hear a lot about you, Magar, लेकिन we are falling short of time. So, any one last thing that we can take from the audience, and then we'll have this beautiful dance जी, performance. आप सवाल पूछेंगे तो जवाब ऐसे अच्छे निकलेंगे। Yeah, Akshat will be there with us post the dance performance also, so you can have a conversation with him. So, one last thing that we can take from the audience, anybody, or
Sorry? Shakuntala and Radha, please. Shakuntala and Radha. एक ही question में like 4 questions they are asking. Radha. मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर मुझसे ना बुलवाइए। कुछ लोग जो हंस रहे हो समझ चुके हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ना बुलवाइए। कि मैं पर्सनली जैसे मेरा अपना वर्जन है रामायण का कि रामायण राम ने नहीं रचा था, रामायण विष्णु ने नहीं रचा था, रामायण सीता ने रचा था, लक्ष्मी ने किया। वैसे ही मेरा जो वर्जन है शकुंतला को लेके और राधा को लेके वो वर्जन है जिसको सुनाते हुए मैं रो देता हूँ। मेरे को बड़ी तकलीफ होती है उस बात से, क्योंकि मैं उस बात से खुश नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि अगर बाकी सब सत्य हो ना तो भी ये राधा कृष्ण वाली कहानी मिथ्या ही थी। ये सच में ना हुआ तो ज़्यादा अच्छा। तो और कुछ पूछ लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको। मैं भाव भी बोल रहा था कि राधा we can take off record. Yeah. I have a child 8 years old. ओके, दो जगह से सवाल आ रहा है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। I'll come to you, ma'am. I have a child who is 8 years old and another who is 6. But they feel that these are myths, right? Like they don't believe it. They're like, this is not possible. How do I inculcate in them that this is actually our culture, this is our history? Because today Western culture also says that these are just stories, right? So there's a book called Sapiens that's very famous and it says that these are all stories just to connect people, they're not real. So how do I make them believe that this is real? Ma'am, the only way to not defeat, it's not about winning or losing. The only way to keep this part of your story, that it is not just a story, we can only fight it through our logics. जैसे भी आपने sapiens बोला, right? Darwin's theory of evolution, I see that most of us are very well educated people. Darwin's theory of evolution में दिखाया ना कि पहले वो मछली पानी से शुरू हुआ, फिर वहाँ से एक ऐसा प्राणी है जो पानी में और जमीन पे दोनों में सांस ले लेता था। उसके बाद फिर पहली बार लाइफ केम ऑन अर्थ, करेक्ट? फिर ऐसा हुआ, फिर अर्ली मैन बना, फिर वो मांस खाता था, फिर वो और आगे बढ़ा, फिर वो एग्रीकल्चर सीखा। दिस इज व्हाट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। व्हाट इज दशावतार देन? व्हाट इज दशावतार देन? पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार मछली के अवतार में विष्णु जी पहली बार आए। दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यहाँ घूम रहे हैं 2-3 इसके अंदर, कूर्म कछुआ। उसके बाद है अभी सबने कांतारा देखी, तीसरा वराह अवतार। तो वराह अवतार की जो कहानी है, जो आपने देखा होगा कि वो बोर फेस है और उसके सींग के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है ना, तो दैट इज अ डिपिक्शन दैट बोर वाज द फर्स्ट एनिमल दैट वाज प्योरली अ लैंड एनिमल। तो हमने उसको कैसे दिखाया कि क्षीर सागर से वराह अवतार ने पृथ्वी को अपने सींग में रख के बाहर निकाला। इट इज नॉट बाहर निकाला, इट इज लैंड वाज क्रिएटेड एंड दिस वाज द फर्स्ट एनिमल ऑन दैट इन द प्लैनेट। तो ऐसे आप सोचिए ना कि आपके दशावतार में एक बलराम आते हैं, तो बलराम जब आते हैं तो हमारे पास इतने हथियार हैं सारे भगवानों को देने के लिए, बलराम को हमने हल क्यों दे रखा? हम गदा दे सकते थे। बलराम से गदा सीखे थे भीम भी और दुर्योधन भी। बलराम के जो बेस्ट 2 प्रोडिजीज थे, सबसे अच्छे शिष्य थे, वो एक था भीम और उससे भी अच्छा था दुर्योधन बलराम की नजर में। लेकिन बलराम के हाथ में जो हथियार है वो हल क्यों है? डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अबाउट लर्निंग हाउ टू कल्टिवेट। तो कांतारा अब इसी से एक और बात निकलती है, बिकॉज आई हैव सजेस्टेड यू टू फाइट एवरीथिंग थ्रू लॉजिक्स। आई टेक 2-3 मोमेंट्स, सॉरी। लॉजिक्स में फाइट करने वाली बात करें, गैलीलियो एक शख्स थे, एक साइंटिस्ट थे, जो पहली बार जब ये उन्होंने कहा था ना कि अर्थ इज राउंड, आवर प्लैनेट इज गोल, उनको एंटी क्राइस्ट बोल के पहले हाउस अरेस्ट में किया था, बाद में फांसी में डाल दिया था। एंटी क्राइस्ट बोलता है अर्थ गोल है। उस समय में आपके देश में ज्योग्राफी को भूगोल ही कहते थे। भू मतलब लैंड, गोल तो गोल है। These are the things that we can talk on to tell them that Darwin's theory of evolution is nothing but us. Newton's law of gravity सुना है हम लोगों ने, पढ़ा है हम लोगों ने, करेक्ट? गलत पढ़ा है। Now that is what I call as myth, that the law of gravity was invented or created or discovered, whatever you want to call it as, was done by Newton. No,
न्यूटन के 500 साल, न्यूटन के 1000 साल पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। उन्होंने बोला था कि जैसे पानी का काम होता है शीतलता प्रदान करना, जैसे अग्नि का काम होता है हर चीज को भस्म करना, वैसे पृथ्वी का, जमीन का काम होता है हर चीज को अपने प्रति आकर्षित करना। वो मर गए 3 लाइन लिख के अपनी किताब में। उनके 500 साल बाद भास्कर द्वितीय, जिन्होंने इस 3 लाइन को उठाया, उसकी पूरी किताब लिखी और एक शब्द दिया कि आज के बाद हम इस शब्द को कहेंगे, इस फिनोमेनन को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, जो कि ग्रेविटी का हिंदी है। आफ्टर ब्रह्मगुप्त द्वितीय डाइड 500 आफ्टर हिज डेथ, न्यूटन अंकल पैदा हुए थे, लेकिन हमको ये पढ़ा दिया गया है कि न्यूटन गेव अस द लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे अभी डिस्कवरी और इन्वेंशन मैंने बोला तो हम लोग बहुत देर से सीरियस बात कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। I was in class 6th and then came a new teacher in my class and he said, give me the shortest difference between invention and discovery. I thought ये तो आता है। So I stood and I started telling about Vasco da Gama and Columbus and Graham Bell and पता नहीं क्या क्या। He said, हाँ ठीक है, sit down। और 4 लोगों ने हाथ उठाया, सबको मौका मिला। मुझे लगा ये आदमी convince नहीं हुआ। I raised my hands again, I spoke again। बोले हाँ ठीक है। मुझे लगा ये खुश नहीं हो रहा है। मैंने तीसरी बार हाथ उठाया, it backfired। अब उनको गुस्सा आ रहा था मेरे ऊपर। बोले खड़े हो, तुम क्या नाम है तुम्हारा? 6th क्लास में था मैं, स्टूडेंट में से अक्षर गुप्ता सर। And then he said, you know, Akshat, the shortest difference between invention and discovery is that your father discovered your mother and invented you. You just sit down. That for me is the shortest difference between invention and discovery. But later in my life, I realized when I learned that it was in my life the other way around. My mom proposed my dad. So she discovered my dad and invented me. So that's how it is. Last question, please. जी नहीं, मैंने एक्चुअली वाल्मीकि रामायण में तो ये लिखा भी नहीं। मैंने बिहार चोपड़ा साहब की देखी है महाभारत, उसमें ये है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये बात नहीं है। पर अगर मैं मानूं भी कि हाँ ऐसा हुआ था, जिससे मुझे कोई परहेज नहीं, आई हैव नो एलर्जी इनटू कि हाँ ऐसा हुआ होगा और द्रौपदी ने बोला हो तो करेक्ट किया होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि द्रौपदी की कहानी शुरू हुई द्रुपद से। द्रुपद द्रौपदी के पिता थे। We will go a little back to explain, to answer the question. तो द्रुपद को बदला लेना था कुरुवंश से, द्रोणाचार्य की वजह से। द्रोणाचार्य ने द्रुपद से उनका आधा देश छीना था और उनका आधा देश छीनने भेजा गया था पांडवों को। तो पांडवों और कौरवों को लड़वाना था और द्रुपद, जो राजा द्रुपद थे, उनकी बेटी थी द्रौपदी। तो द्रौपदी, कुछ वर्जन्स ऑफ महाभारत में द्रौपदी ऑल्सो हैड एन एजेंडा है, सीता है। तो वो नहीं होता तो फिर शायद वो नहीं होता कि जो चीरहरण हुआ, चीरहरण नहीं होता तो इतना कलेश नहीं होता। तो इसी चीजों पे हम लोग मजाक में बोलते थे, मैं भी बोलता था, पर विद टाइम आई रियलाइज दैट इट वाज अ वेरी बैड जोक कि हर झगड़ा महिलाओं के कारण होता है। एक गलत थॉट है। महिलाओं के कारण झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम पैट्रियार्की सोसाइटी है। मैट्रियार्की सोसाइटी होते तो आप लोग घर घर में झगड़ के निपटा लेते, मार काट नहीं मचने देते। You would have taken a good care of that. We will have to understand कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम लोग बोलते हैं सबसे पावरफुल है, नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिला के बनते हैं शक्ति। साइंस पढ़े हैं ना, एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनता है एटम। तो वैसे ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिलके बनते हैं शक्ति। क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, प्रिजर्वर मिलके बनता है सृष्टि, प्रकृति। इसीलिए मदर नेचर होता है, फादर नेचर नहीं होता। We'll have one last question from Priyanka. किसी के घर में कटोरी गिर गई, so क्या आप वही से बोल रही हैं? Yeah. Being a sociology author, like I don't call it
बीच में छूट जाएगी बात। Being a Satyology author and in this new generation of Bharat coming up, what is your little take that I think we should all educate our children? How do we introduce Satyology? Oh, how to introduce Satyology and what should we teach our children? How do you introduce Satyology to them in this new waking up of Bharat? Yeah, it's okay. Very question, ma'am. इसका आंसर जितनी देर में अभी तक बक किया हूँ उतना पूरा मिला के बोलूँगा तो छोटा पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं ना कि ABCD तो सीख लो, तो हम हर जगह पे लगा देते हैं ना, गाड़ी चलाने का ABCD, लैंग्वेज का ABCD, रिश्तों का ABCD बोलते हैं, तो हम इसमें भी ABCD लगा लेते हैं। I understand that it's very important to know English in order to stand in the global platform. There's no debate on that. पर ये क्यों लिखा है कि अपने को A for apple, B for ball, C for cat, D for dog सीखना है? सोचिए थोड़ा, हमारे बच्चे उस समय भी जब वहाँ के बच्चे A for apple, B for ball सीखते होंगे ना, तब यहाँ के गुरुकुल का बच्चा आज से 1000 साल पहले पूरा स्टोरी सीखता था और अर्थात करके उसका मायने भी बोल लेता था। तो वहां से एक आया सिस्टमैटिकली हमको बताया कि A for apple, B for ball, C for cat, D for dog से करके G for God तक और पता नहीं आगे भी ABCD सिखाना है ना। Why not A for Agni? Why D for ball? Why not D for भवानी, भगवत गीता, भगवान, भगवा? Why C for cat? Why not C for culture? आप किसी भी कल्चर के हो, आप मुस्लिम में तो A for अल्लाह सिखाओ, A for अग्नि मत सिखाओ, चलो ठीक है। C for culture होता है, D for dog नहीं होता है। मेरे घर का बच्चा D for dog सूट सीख जाएगा। D for धर्म होता है, आप किसी भी समुदाय के हो, D for धर्म होता है। E for elephant सिखाना है ना, E for एकदंत सिखाना है। बच्चा पूछेगा ना एकदंत क्या होता है, उसके पीछे एक कहानी लिखी। We have never seen a tree flying ever because trees know that they are only surviving unless and until they are rooted. They are connected with their roots. Our culture is our roots. E for एकदंत सिखाइए, E for elephant सीख जाए। F for faith सिखाइए, fan सीख जाए। G for गुरु सिखाइए, G for गुरु नानक सिखाइए, G for गुरुद्वारा सिखाइए, G for गरुड़ पुराण सिखाइए, G for God सीख जाए। तो ABCD से शुरू करें, तो ABCD से शुरू करेंगे तो आगे की चीजें अपने आप शायद रास्ता बने। I can take you till Z, तब फिर रितु मैं मेरे पे बाद में बोलेंगे कि हो गया, समझ गया, बस। One last thing that I wish to add, मैंने बीच में कुछ पूछ लिया था तो मेरी एक जरूरी बात रह गई which I had to, because I always speak that on camera और आज भी यहाँ कैमरा है। मेरी जो संघर्ष है, she saved my life, she has brought me out of depression. I tried to commit suicide in 2014. She was not in my life then, I didn't know that she existed. She came in my life in 2015. She saved my life, she brought me out of depression, she brought me to Mumbai. That is why a full-time house husband proudly, because there was a time of 4 long years when I was taking care of home and she was taking care of me by working in 5 states. वो सूटकेस में रहती ताकि मैं अच्छे घर पे रह सकूं। वो मुझसे 3.5 साल छोटी हैं और आज की डेट में मुझे जब भी कोई अवार्ड मिलता है, कोई चेक मिलता है, कोई नया एग्रीमेंट साइन होता है तो मैं उनके हाथ में देता हूँ और मैं अपने दोनों हाथों से उनका 2 पाँव छूता हूँ और ये मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ और जीवन पर्यंत ये करता हूँ। So that is why Dorila Putra Akshat Gupta, full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist। हम यहीं से बात शुरू किए थे, तो एक 2 लाइनें हैं कि जहाँ से चले थे फिर वहीं आकर ठहरे हैं। एक और लग गई समझते कि दुनिया गोल है, तो हाँ दुनिया गोल है और हम वापस वहीं आ गए जहाँ से हमने बात की शुरुआत की। Thank you so much, Akshat ji. We'll take a seat there, and the conversations can go on when we have food. So thank you so much, and over to you, Prachna. Thank you, Mr. Gupta and Ms. Ritusha, for the enlightening session. I now invite our speaker and our chairperson to kindly join us in the audience to enjoy the beautiful Kathak dance by the students of Akriti Kathak Kendra, choreographed by Ms. Mangla and Mr. Raghav Rajpal.
Students of Akriti Dance School, committed to preserving, promoting and facilitating Kathak in India and across the world, where students are carefully guided in their journey and molded to be exquisite dancers. Miss Mangala and Mr. Raghav Rajbhat, disciples of Pandit Durga Lalji and Pandit Birju Maharajji respectively, are one of the senior most and well-renowned artists of this country. Starting from their humble beginning at Kathak Kendra to a global audience across 6 continents, 40 cities and innumerable concerts, they have taken forward the classical form of Kathak dance, maintaining its true essence through their productions, choreographies and collaborations. Ladies, please put your hands together and join me in welcoming the students of Akriti Kathak Kendra. Lord Shiva, the God who destroys and creates, the Supreme One adorned by the Trishul, Vasuki, Nandi, Lingam, Ganga, the third eye of wisdom, Rudraksha and the tiger skin. In a week's time, we are all going to be celebrating the auspicious occasion of Mahashivratri. Describing these characteristics of Ardhanarishwara, we commence our performance seeking the blessings of the great yogi Lord Shiva.
invocation to the elements of Mother Nature with a composition titled Mangalam, which describes the beauty of nature, the richness in the living world around us, and how important it is to preserve its essence. It is a mantra of goodwill, a mantra of harmony in all elements of nature, like on earth, in water, in fire, in the wind, in the skies, in the sun and moon, in all living beings, in mind and in spirit.
The next presentation is a tarana, a composition at the crossroads of vocal, instrumental and dancing arts, where commonly encountered bols are Nadirdhani, Tumdirdhani, Derena, Derenadi, Tana Nana Nana. Into the fabric of tarana are interwoven various technical aspects of Kathak. The audible bols of tarana become visible through the matching footwork and movements of the performer. The tarana being presented today evening is composed by Guru Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj Ji in Rag Nat Bhairavi and set in Teen Tal. The tarana is composed by Guru Pandit Ravi Shankar Ji.
Composed by philosopher Adi Shankaracharya, Aigiri Nandini is a devotional hymn. This sacred composition invokes the feminine energy, power, and grace, describing the goddess as the daughter of the mountain king, the goddess who killed the demon Mahishasura, and hence came to be revered as Mahishasura Mardini. It is the mantra that can destroy our fears, vices, and sorrows, and bestow upon us the compassionate blessing of Devi. We conclude the evening with this piece. भगवती देवी कुटुम्बिनी कुटुम्बिनी गौरी कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी जगवती शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्जयवर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि भुवनपोषिणि शङ्करपोषिणि
I would like to introduce our Akriti team. Divya Pathak, Harika Adhikari, Preeti Krishnan, Pujita, Shamika, Nikita, Gayatri. Thank you so much for this beautiful evening. I would like to thank Miss Ritu Shah, Flow Chapter Hyderabad. और मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वो इट इज सिंक्ड इन, जैसे अक्षत जी ने भी बताया सारी बातें. हमारा भी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है जो कथक है, जिसका ओरिजिन है मंदिरों में कथाकार जो कथावाचक थे, उससे ही सारा उद्गम हुआ है कथक का. सो एक कहावत है कि कथा कहे सो कथिक कहलाए, और कथिक से कथक शब्द आए हैं. तो इस तरह से हमारा भी ये है, और ये सारा हेरिटेज और सुंदर सी ऑडियंस. लवली, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर आकृति टीम. राघव जी आइए. We would like to thank everyone. Thank you so much. Thank you, Mangala ji and Mr. Radha Gardner. Thank you to the students of Akriti Katha Kendra for the beautiful performance. As we come to the end of this wonderful evening, could I kindly request Ms. Priya Das, Senior Vice Chairperson, Flow Hyderabad Chapter, to deliver the vote of thanks. Good evening. You would all agree with me that it's been an enthralling evening. So many things, from ecology to storytelling to fine arts. We've traversed the whole gamut of thoughts, actions and emotions that make our world a beautiful place to live in. Kudos to Kalpana Ramesh for reinstating our stepwells to their former glory and giving us all a glimpse into our glorious past. Thank you so much for joining us here this evening, Kalpana. The setting is ethereal, to say the least. Thank you, AKSHAT GUPTA ji, for your subtology about Bharat's beloved characters and for taking us through how these distinct personalities, their actions and their decisions have laid the foundation of India's unique culture. My pranams to Guru Mangala Bhatji and Guru Raghav Raj Bhatji of Akriti Katha Kendra, and a big thank you to all the artists for their mesmerizing performance. It was a befitting finale indeed to this enchanting evening. I thank the event and working committees for organizing yet another seamless evening. Many thanks to our past chairpersons for their encouraging presence, and to all of you in the audience for joining us here
and for being such an encouraging and appreciative audience. And now, there is a sumptuous dinner laid out for you. Do partake in it. Thank you and namaskar.